How will the year 2027 actually be for India? 2027 भारत के लिए कैसा साल? Will India be able to achieve its goal of becoming 5 trillion economy? Natural to ask these questions. जब मुश्किल से 6-7 महीने अब साल खत्म होने को 2026 खत्म होने में लग रहे, yet nobody is willing to predict how will 2027 actually be for India. Of course, India में astrologers की कमी नहीं, परंतु मेरी नॉलेज भी एस्ट्रोलॉजी की कोई बहुत अच्छी नहीं है. इट्स लाइक बटुक महाराज फ्रॉम मुन्ना भाई एमबीबीएस, एब्सोल्युटली यूजलेस. बट लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें कि बटुक महाराज जी शायद अच्छा प्रेडिक्शन कर देते हैड ही केयरफुली ऑब्जर्व मुन्ना भाई एंड सर्किट देमसेल्व्स, क्योंकि बिहेवियर रिवील कर देता किस दिशा में चीज जा रही. प्रोवाइडेड you observe honestly and you know what to look for. Indicators always appear long before the event itself. और ये अप्लाई करता देशों के लिए भी. और रुचिर शर्मा एक renowned फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वर्ल्ड के, उन्होंने अपनी किताब में बेस्ट सेलर किताब थी राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, उसमें भी उन्होंने इन्हीं इंडिकेटर्स का जिक्र किया. सो परहैप्स क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हाउ विल द ईयर 2027 एक्चुअली बी फॉर इंडिया. रादर क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट आर द इंडिकेटर्स जो हमें ऑलरेडी दिखा रहे हैं अबाउट वेयर इंडिया माइट बी हेडिंग इन 2027 ऑनवर्ड्स. एंड परहैप्स पहला इंडिकेटर जो है इज ऑलरेडी विजिबल अबव आवर हेड्स. Out of almost 100 hottest cities, most are now in India. Water stress grow हो रहा. नीति आयोग ने पहले ही वार्न कर दिया था अपनी रिपोर्ट में. साइंटिस्ट ने भी वार्न कर दिया कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अ रैपिड पेस एंड विच कैन ब्रिंग कैलामिटी. तो मेजर शॉक वेव्स कहां फील होंगी? दे वोंट बी फेल्ट इन एयर कंडीशनड ऑफिसेस, दे विल बी फेल्ट इन आवर फील्ड्स. Uneven monsoons, ongoing fertilizer shortages, rising energy costs, global instability are likely to reduce agricultural productivity. और ये रिजल्ट होगा सिर्फ इन्फ्लेशन में नहीं, it may result into food insecurity also for millions who are living on fragile incomes. Everything would become costlier. So this brings us to another India's deepest structural weakness as well as an indicator. Nearly 90% of India's workforce earns below 50,000 per month. और उसमें से भी 80-90% are earning much less than that. So this implies कि एक emergency जो है is enough to destabilize entire families. A low income population has very limited capacity to withstand prolonged economic crisis. And this brings us to another very dangerous aspect for an economy which is heavily dependent on imports and the currency that is weakening. Agar rupee it continues to hover around 100 per dollar, inflation could hit us hard. Price rise जो है वो सिर्फ एक जगह फ्यूल पे ही नहीं टिकेगा, जो अभी 2 बार बढ़ चुका है. इट विल स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर ऑफ आवर डेली लाइफ, फूड, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, हाउस होल्ड आइटम्स. और लेकिन जब शॉक जो है कंटिन्यूस मिलता रहता है तो रिकवरी भी कमजोर हो जाती है, और दैट इज व्हाट मेक्स द नेक्स्ट फेज पोटेंशियली डेंजरस फॉर इंडिया. इंडिया जो है, इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट फेस्ड जस्ट वन शॉक, इट हैज फेस्ड अ सीरीज ऑफ शॉक्स. And each shock has weakened small businesses, informal sectors, savings, and the purchasing power of people. और जब सारे प्रेशर्स एक्युमुलेट होने लगते हैं और साथ साथ ही एराइव होने लगते हैं, तो सडनली क्या होता है, जो स्ट्रेन है इट स्टार्ट सरफेसिंग अक्रॉस द सोसाइटी. सो इट रेजेस अनदर क्वेश्चन and comes to another indicator कि if the stress intensifies, does the government still possess enough financial strength to respond effectively? And है वो rise हो रहा है gradually. Massive highways, bridges, corridors, expressways, they created an image
कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो अनस्टॉपेबल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स इकोनॉमिकली ओनली when supported by industrial activity, demand, employment, purchasing power. Otherwise, वो concrete जो है it becomes a liability. अब प्राइम मिनिस्टर की खुद की अपील जो है टू स्पेंड कॉशियसली, वो भी इंडिकेट करती है देयर इज अ स्ट्रेन बीनीथ द सरफेस व्हिच इज बीइंग फिल्ड बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज कमिंग. अब अगर एक बार ये फियर इट एंटर्स द कंज्यूमर बिहेवियर, स्लो डाउन जो है इट स्प्रेड्स रैपिडली अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एंड दिस sluggishness will have an impact on another thing. वो is another indicator, and that is employment. India's real crisis is not just unemployment. Underemployment is also a problem. Millions may technically be working and employed, yet they are earning too little to build stability in their lives or dignity. और वो जो है फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन वो इज नो लॉन्गर साइलेंट, इट इज विजिबल नाउ फॉर दोज हु वांट टू सी इट. अब जब ये इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन इट स्टार्ट्स spreading across a society which is already polarized and emotionally charged, it becomes a social as well as political issue, which is the next indicator. Economic distress जो होता है, it becomes dangerous when it is combined with social distress. पिछले एक decade में India's social harmony has weakened. Polarization has entered everyday life and even our rural areas. लेकिन economic stress fractured societies में they become volatile very quickly. If the situation is not handled with sensitivity, balance and maturity that such movements demand. And perhaps वहीं पे हमारा deeper concern है, which is now our next indicator कि हम distress को कैसे handle कर. The pattern has always been high-handedness. We are trying to label discontentment and stress, and this is how we are doing it. Such methods may suppress the visible anger temporarily, लेकिन anger जो है अंदर ही अंदर सिमर करता रहता है, वो accumulate करता रहता है almost invisibly. Perhaps the most dangerous weakness India enters this phase with is not economic. It is psychological and institutional, and that is the trust deficit. India is increasingly becoming a trust deficit society, where citizens no longer trust institutions and people don't trust each other. And when trust disappears, crisis escalates fast. And so we enter a vicious circle, जहां ये सारे pressures accumulate होते हैं and they push a society into a vicious circle of discontentment and instability and chaos. और उससे एक डेंजर निकल के आता है जो prolonged अगर ये chaos और instability रहती है, तो any society which is going through this turmoil from within, it invites external adversaries attention. Adversaries कभी passive onlookers नहीं होते हैं. They are always looking for appropriate opportunities. In a low trust, emotionally polarized society, already under so many stresses, limited disturbances also can trigger disproportionately larger consequences. So the conclusion is 2027 onwards, therefore, we may witness the year when India starts feeling the accumulated consequences of our decisions, of shocks and divisions that have been building over a period of last 10 to 12 years. Or perhaps, लेकिन greater irony would be that even then, when the society would be entering this phase of instability, discontentment and chaos, slogans will continue to remain unchanged, and people will continue to blame each other for the resultant chaos, and they will continue to label each other कि तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, तुम एंटी इंडिया हो कि एंटी हिंदू.
Thank you. Jai